लेट्स स्टार्ट विथ गूसबेरी. ठीक है. नाउ लेट्स गो आइटम बाय आइटम. ठीक है, लेट्स नॉट रीड ऑल ऑफ इट टुगेदर एंड देन बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना है. फोकस ऑन वन एरिया एट अ टाइम. ठीक है. 1 जुलाई है. यू आर एन ऑडिट मैनेजर ऑफ क्रैनबेरी एंड को एंड यू आर करंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ गूसबेरी कंपनी, अ कंपनी विच develops and manufactures health and beauty products and distributes these to wholesale customers. Its draft profit before tax is 6.4 million and total assets are 37.2 million for the financial year ended 30th of April 2005. The final audit is due to commence shortly and the following matters have been brought to your attention. PBT is how much? PBT is 6.4 million. 6.4 million and total assets 30 37.2 million. Why is this information given to you? क्यों दिया है ये? बता सकते हैं? materiality. वेरी गुड. बी मोर कॉन्फिडेंट शर्मा जी. क्यों दिया है ये इंफॉर्मेशन? Materiality. वेरी गुड, फॉर मटीरियलिटी. परफेक्ट. सो पीबीटी के लिए मटीरियलिटी लेवल्स आर 5 to 10%. टोटल असेट्स के लिए to 2%. 1 to 2 की 0.5 to 1? To 2, sir. Revenue clear 0.52. Yes, sir. Revenue. ओके. Gooseberry Company spent 1.9 million in the current year developing 9 new health and beauty products, all of which are at different stages of development. Once they meet the recognition criteria under IAS 38, intangible assets for development expenditure, Gooseberry Company includes the cost incurred within intangible assets. Once production commences, the intangible assets are amortized on a straight line basis. Management believes that this amortization policy is a reasonable approximation. Amortization over 3 years. It is a reasonable approximation of the asset's useful life, as in this industry there is a constant demand for innovative new products. ठीक है. अब they have asked you what is the question. The question requirement is procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence in relation to research and development. अब how do you get sufficient appropriate audit evidence about any item? First of all, you have to think about A, what can go wrong in terms of what is the risk, and second, what are the financial statement assertions associated with it. ठीक है. What do you mean by अब risk मतलब what can go wrong. ठीक है. अब is one moment. Now, what do you, so first of all, think about the assertions and think about along with that what are the risks, मतलब what can go wrong in case of these items. ठीक है. Now, first thing whenever see in research and development expenditure, सबसे पहले चेक करो कि वेदर द बैलेंस इन द लेजर, द ट्रायल बैलेंस एंड द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये क्लोजिंग बैलेंस तीनों जगह पे मैच होना चाहिए. स्टेप वन, दैट गिव्स यू कि हाँ भाई वॉट एवर इज देयर इन द लेजर इज इन द टीबी इज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देन डायरेक्टर्स हैव सेड हियर दैट वील टेक 3 years एज यूजफुल लाइफ, है ना. सो डिस्कस विद द डायरेक्टर व्हाट इज द रैशनल और द रीजन बिहाइंड अडॉप्टिंग अ 3 year यूजफुल लाइफ एंड कंसिडर इट्स रीजनेबलनेस. ठीक है. देन रिकैलकुलेट द अमोर्टाइजेशन चार्ज फॉर अ सैंपल ऑफ. क्या करना पड़ेगा? अमोर्टाइजेशन चेक करो व्हाट इज द अमोर्टाइजेशन पॉलिसी. सी एक्चुअली अमोर्टाइजेशन शुड बिगिन फ्रॉम द डेट the commercial production begins. So just recheck whether they have actually calculated amortization from the date of commencement of commercial production. ठीक है. वो एक पॉइंट होगा. देन उसके बाद देर आर 9 Sir, प्रोजेक्ट्स दैट हैव हैपेंड हियर. अब 9 न्यू प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दे वांट टू कैपिटलाइज. चेक करो एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज ईच प्रोजेक्ट and there are certain expenses which have been expensed off. Now
For those items which are expensed off as research, check whether they are actually falling under the research expenditure criteria. मतलब these should be expenses for finding something, prospecting something, researching something. Product should not be ready. एंड हाउ विल यू वेरीफाई? आप इनवॉइस चेक करेंगे. इफ यू हैव पेड समवन तो इनवॉइस होगा ना रिसर्च एक्सपेंडिचर का, उससे अमाउंट यू विल बी एबल टू वेरीफाई. दैट बिकम्स द सपोर्टिंग डॉक. एंड देयर विल बी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन. उस पर लिखा रहेगा फॉर व्हाट पर्पस हैव यू परचेस्ड दिस आइटम. जैसे इफ यू हैव परचेस्ड अ कार तो देयर विल बी एन इनवॉइस, देयर विल बी अ बिल. सिमिलरली इफ यू हैव पेड फॉर सम साइंटिफिक रिसर्च इक्विपमेंट, टेस्ट ट्यूब एंड बीकर और इस सब के लिए, तो a supporting invoice has to be there, right? Now, if you remember, there are certain conditions prescribed under IAS 38. What are for capitalization of development expenditure? अब आपको वेरीफाई करना है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट assertions, एग्जिस्टेंस हो गया, वैल्यूएशन हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, ऑल ऑफ दीज. You will first of all obtain a list of all the expenses incurred during the year. ठीक है. उसके आप इनवॉइसेस चेक करेंगे, अमाउंट गेट्स वेरीफाइड, सो वैल्यूएशन असर्शन गेट्स वेरीफाइड. अमाउंट यू विल वेरीफाई यूजिंग द इनवॉइस. देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द पर्पस फॉर विच ईच ऑफ दीज कॉस्ट्स आर इनकर्ड. ये किस पर्पस के लिए हमने ये एक्सपेंस इनकर किया है. वेयर विल यू गेट टू नो दैट? आप कभी कोई चीज खरीदते हो तो इनवॉइस में एक डिस्क्रिप्शन होता है, राइट, कि व्हाट वाज परचेस्ड हियर, है ना. अगर मैं ये फोन खरीदूंगा तो लिखा रहेगा ना आईफोन सो एंड सो वाज परचेस्ड. मतलब दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फॉर व्हाट पर्पस वाज दिस एक्सपेंडिचर इनकर्ड. ठीक है. देन रिव्यू मार्केट रिसर्च रिपोर्ट. अभी यहां पे आपको ये भी चेक करना है कि whether those conditions in IAS 38 are fulfilled. Do you remember the conditions in IAS 38 for capitalization of development expenditure? I need to revise once again. I beg your pardon? I need to revise. I forgot a little bit. Who remembers? Technical feasibility, then intention to complete and sell the product, right? What else? Ability to complete, To complete, More than able 12 to months. future economic benefits. future economic benefits. There has to be an active market to sell the product, right? Sell the product. Yes, 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 yes. So all of these points will have to be mentioned, है ना. सो रिसर्च के लिए कुछ और करेंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए यू विल हैव टू थिंक अबाउट द क्राइटेरिया एंड चेक करो कि इज देयर एन एक्टिव मार्केट वेयर यू कैन सेल द प्रोडक्ट. इज इट? if there is an active market for the product to be sold, then that means there is a chance that future economic benefits will come to the company, right? So all of these points have to be written. Think about कि यार whenever you are framing a procedure ना, think about yourself as a इन्वेस्टिगेटर. लाइक एज इफ यू नो आप कोई ऐसे सीआईडी सीबीआई में हो, आपके से आप यू वांट टू वेरीफाई कि यार सामने वाला जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है. तो इफ यू वांट टू वेरीफाई वेदर द अदर पर्सन दैट यू आर स्पीकिंग टू इज ही स्पीकिंग द ट्रूथ और इज ही लाइंग, तो देर आर सर्टन टेस्ट दैट यू विल परफॉर्म ना. जैसे इफ आई वांट टू वेरीफाई वेदर करण इज सेइंग आई एम इन हांगकांग, मे बी झूठ बोल रहा होगा, किसको पता. तो मैं क्या बोलूंगा, करण शो मी द व्यू आउटसाइड योर विंडो राइट नाउ. ठीक है. इफ ही शोज द व्यू आउटसाइड हिज विंडो, आई कैन मेक आउट ना कि एटलीस्ट इंडिया तो नहीं है, कुछ अलग दिखेगा. तो दैट इज जस्ट अ स्टेप दैट आई एम डूइंग टू वेरीफाई कि ये सच बोलता है कि झूठ बोलता है. दैट इज व्हाट प्रोसीजर्स आर ऑल अबाउट. ठीक है. अब कैन वी डू वन एक्टिविटी छोटा सा. यहां पे सेकंड आइटम क्या है, डेप्रीसिएशन है. प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर दैट यू शुड परफॉर्म टू ऑब्टेन एविडेंस विद रिलेशन टू डेप्रीसिएशन. अब डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है? डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग कॉस्ट ऑफ असेट, यूजफुल लाइफ, रेसिड्यूअल वैल्यू. अब यू वांट टू वेरीफाई द डेप्रीसिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज हैपेंड हियर इन दिस केस, कुछ हुआ है स्पेसिफिक. In June 2005, the company carried out a full review of all of its PPE and updated the useful life, residual values, depreciation rates, and methods. The finance director felt that the changes were necessary to better reflect the use of the asset.
This resulted in depreciation charge of some assets changing significantly. ठीक है. Now here it's not just verification of depreciation. यहाँ पे useful life of asset has changed. Residual value has changed. Depreciation rates and methods have changed for many assets. अब think about it. एक कोई asset था आपका जिसका cost था 1 लाख. ठीक है. उसका पहले यूजफुल लाइफ था 5 इयर्स. पर एनम डेप्रीसिएशन हो रहा था 20,000. आपने उसका लाइफ रिवाइज करके कर दिया 15,000. पर एनम डेप्रीसिएशन हो रहा है 6,667. तो डेप्रीसिएशन तो 1/3 से भी कम हो गया. राइट. ना, don't you think the company can use this as a tool to manipulate the profits and to manipulate the position of assets? तो गड़बड़ तो बहुत हो सकता है. तो आपको प्रोसीजर ये परफॉर्म करना है कि यार इन दिस सिचुएशन वैल्यूज हैव अंडरगॉन अ चेंज. डेप्रीसिएशन के वैल्यूज क्यों चेंज हुए हैं? बिकॉज ऑफ यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू, डेप्रीसिएशन रेट मेथड सब कुछ बदला है. तो नाउ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड how does that, what activities will you have to do to check each of these. ठीक है. Can I give you some time, 5 minutes, and you think about आप इस सब को कैसे वेरीफाई करेंगे? ठीक है. कैन यू डू दैट? 5 मिनट में देता हूं आपको. आपको जस्ट सोच के मुझे ये बताना है कि आप क्या क्या करेंगे. जैसे इफ यूजफुल लाइफ हैज चेंज्ड फ्रॉम 5 इट हैज गॉन टू 15, तो व्हाट आर द स्टेप्स यू विल डू टू वेरीफाई द 15? ठीक है. ऐसे आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट एंड टेल मी. ठीक है. प्लीज स्टार्ट. Let's hear what all of you have to say now. Tell me. सर मैनेजमेंट एक्सपर्ट और ऑडिट एक्सपर्ट से मतलब पूछेंगे कि वैल्यूएशन ये ठीक है यूजफुल लाइफ की. ठीक है. थोड़ा बहुत अच्छा पॉइंट है, थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो. सर किसी मैनेजमेंट सीधे हम लोग मिनट बोर्ड के मिनट्स लेंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि आपने जो ये चेंज करा है वो क्यों करा है और इसका क्या बेसिस था चेंज करने का. ओके ओके. कैन यू, इज देयर समथिंग दैट यू कैन कंपेयर दिस विथ? कि अगर किसी ने कंप्यूटर का यूजफुल लाइफ 6 इयर्स का 8 इयर्स कर दिया, ठीक है, 6 इयर्स का 12 इयर्स कर दिया, तो एक्सपर्ट को पूछना वगैरह इज अ फेयर पॉइंट. कैन यू कंपेयर विथ व्हाट इज ऑन एन एवरेज द यूजफुल लाइफ ऑफ दीज आइटम्स? क्या ये आप चेक कर सकते हो? Yes, how the similar asset in the market यस is सर. like fulfilling. So That's mostly all laptops, all computers will have a similar useful life ना. ऐसा तो कोई, मैं उसको विशेष प्यार तो नहीं करता हूँ मेरे लैपटॉप को कि मेरे लैपटॉप का यूजफुल लाइफ 10 इयर्स बट तुम्हारे लैपटॉप का यूजफुल लाइफ 3 इयर्स. दैट कैन नॉट बी द केस. करेक्ट. सो naturally I'll have to be on the lookout for that kind of comparative information also. What else comes to your mind? अच्छे पॉइंट्स है. गो अहेड, कीप ऑन मेकिंग. basis for revaluation and basis for updation of useful life, residual value, reasons for changes in depreciation rates and methods used. ओके. अगर मेथड चेंज हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? The depreciation amount charged will be different from earlier. Like if we change from SLM to WDV, the amount of depreciation charge will be different. Okay. And see, now tell me, change in depreciation method, is it a change in estimate or change in accounting policy? In accounting, एस्टिमेट. It is a change in estimate. Change in depreciation method is a change in estimate. Karan, कहाँ है ध्यान? sorry, Okay. So anything with respect to that which you want to point out? सर इस पे कास्ट एंड ब्रेकडाउन वाला पॉइंट लग सकता है कि टू अग्री द बैलेंसेस ऑफ depreciation. Okay. Elaborate further. Actually, I didn't remember. Don't remember the point intact. That agree the balance of the individual ledger account to the trial balance, and then
agrees a trial balance to financial statement. It goes like this or not? Okay. Okay. Good that you use the word agree. Agree is the right word to be used. Match word use mat karo, agree use karo. First of all, don't you think you should, let's summarize your points. You will have to discuss with the management the rationale for changes to PPE ka useful life, residual value, depreciation method. Like you mentioned, discuss with the management. Then reasonableness of these changes by comparing the, so again, you will have to check the reasonableness kaise, by comparing it with what is the industry average and knowledge of the business. Computer का 4 साल, something else का 10 years. ठीक है. Then uh, now that the depreciation rates have changed, don't you think you should check the depreciation calculation once again? मैनेजमेंट ने बोल तो दिया कि WDV मेथड का रेट इज नाउ 15% एंड नॉट 10%. सी वेदर दे हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड यूजिंग दोज रेट्स. वो चेक करो आप. देन see whether it is reflected in the ledger and in the non-current asset register. Correct? Then those assets where a significant change has occurred. ठीक है. All of those assets where a significant change of useful life बोलो, residual value बोलो, wherever that has happened, what should you do? You should check the value with the prior year. है ना? Previous year का value check करो and see whether it makes, how much of a difference has been created because of that. And then ask the management whether, discuss with the management ki, is this reasonable, is this appropriate. ठीक है. Now the those assets, which have, where the useful life and all of these things have changed, and because of which the depreciation figure has changed, check karo whether appropriate disclosures have happened as per IAS 16 property plant and equipment. एक देखो, मोस्ट ऑफ द, सी आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन हो गया, आइटम्स लाइक इंटेंजिबल असेट्स हो गया, आइटम्स विच आर डायरेक्टली शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सारे केसेस में ना आपने एक बार चेक कर लेना चाहिए कि what are the values shown in the financial statements and have you done the adequate disclosures in the financial statements. ठीक है. Because again, don't write what the disclosure should be. Just say कि यार there is a, whatever is the disclosure requirement as per IAS 16, just check whether that has been done or not. और कुछ मत करो. ठीक है. So these small changes to your answer can bring about a lot of difference in the marks that you get. What writing about the step and the reason behind doing that step. ठीक है. एंड इफ यू ऑब्जर्व, आपके जो भी प्रोसीजर्स है ना, मोस्ट ऑफ देम अपीयर टू बी कॉमन सेंस प्रोसीजर्स. कुछ ऐसा बहुत हम अलग से दिमाग नहीं अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. लेट्स गो थ्रू द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस जस्ट नाउ. Discuss with the management the rationale, the reason for changes to PPE. Depreciation rate, useful life, residual value. ठीक है. I would also mention one point about uh, discussion with management expert and review of his report. ठीक है. Now, checking the reasonableness of these changes. अब जो आपका यूजफुल लाइफ चेंज हुआ है 6 का 60 कर दिया है आपने, इज इट एक्सेप्टेबल, या बस आपने मन में आया इसलिए कर दिया. सो द वर्ड रीजनेबलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीजनेबलनेस एंड मैच इट विद द मार्केट और इंडस्ट्री एवरेजेस. ठीक है. नाउ review the asset expenditure budgets for next few years to assess whether the revised asset lives correspond with planned period until replacement of the relevant asset category. अब why is this, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हमने डिस्कस नहीं किया था. नाउ थिंक अबाउट इट. इफ यू आर, if I say that my asset का useful life is 10 years, ठीक है, and I have a set of machinery that I have purchased in this year, ठीक है. If I am saying that the useful life is 10 years, next acquisition जो आपका fixed asset का बजट है, उसमें मशीनरी का acquisition should happen after 10 years ना. अगर यूजफुल लाइफ 10 years है और आपने आज परचेस किया है, तो नेक्स्ट परचेस कब दिखना चाहिए? 10 years के बाद दिखना चाहिए. What you are doing is, you have very gallantly stated that, you know what, the useful life of my machine is 10 years. But when I look at the budget, when I look at the capital expenditure budget, what do I realize?
आई रियलाइज वन वेरी क्रूशियल थिंग कि मैंने तो 2-2 साल में नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कर दिया है, 2 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर। आई डिड नॉट वेट फॉर 10 ईयर्स। तो अगर मेरा यूजफुल लाइफ 10 साल है तो मैं हर 2 साल में मशीन क्यों खरीद रहा हूँ? शुडंट दैट बी अ पॉइंट? नाउ दिस इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू थिंक ऑफ। ये शायद आपके दिमाग में नहीं आया होगा, विच इज ओके, विच इज वाई आई डिस्कस्ड दिस पॉइंट हियर। ठीक है। देन चेक करो वेदर नॉन करंट असेट रजिस्टर रिफ्लेक्ट्स द डेप्रिसिएशन रेट्स और नॉट। देन review and recalculate profits and losses on disposal of assets sold or scrapped in the year to assess the reasonableness of revised depreciation rates. What does that mean? See, when you sell an asset, what do you compare? You compare the carrying amount of the asset with the disposal proceeds. Okay. These are the two items that you compare. Now, अब when you arrive at WDV or carrying amount, whatever is the remaining amount left, उसके लिए you must have applied depreciation year on year. तो current year के जो whenever you disposed of an asset, उसमें what depreciation rate was applied वो check करो। ठीक है। What was the depreciation rate applied to this specific type of asset, and whether it matches with the changes that you have made in this year. This is how you have to train your mind. ठीक है। अब read the remaining ones. So management expert is someone from outside or within the management only? Appointed by the management of the company. Auditor expert Okay, is appointed by you. ठीक है। yeah, I am thinking about the professional asset reviewer, so I think this is okay. Okay, so thank ठीक है। नाउ आई वॉन्ट यू टू डू वन एक्टिविटी एज योर होमवर्क। ठीक है। आपको आज के प्रोसीजर समझे? वॉट एवर वी डिस्कस टूडे, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ। अब एक एक्टिविटी आई वॉन्ट यू टू डू बाय योर सेल्फ, विच इज बोनस। आपको क्या चेक करना है? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस इन रिलेशन टू डायरेक्टर बोनस। 5 मार्क का एक्सपेक्टेशन है।
आप आपके हिसाब से सोचो कि व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग। अब डायरेक्टर खुद को ही बोनस, मतलब अल्टीमेटली दे आर पेइंग बोनस टू देमसेल्व्स, राइट? ये नंबर आप कहाँ से वेरीफाई कर पाएंगे? यू माइट हैव टू स्टार्ट विथ चेकिंग द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, ठीक है? देन थिंक अबाउट how is the bonus calculation done, management, obtain a calculation of the bonus done by the management, ठीक है? And agree that amount with the one in the financial statements. तो ऐसे आई वॉन्ट यू टू थिंक कि यार बोनस मतलब क्या होता है। इट कुड ईदर बी अ लॉयल्टी बोनस, इट कुड बी अ परफॉर्मेंस बोनस, इट कुड बी एनीथिंग। तो हाउ विल यू वेरीफाई द अमाउंट्स? आप कैलकुलेशन चेक करेंगे, आप पेमेंट चेक करेंगे, आप अग्रीमेंट चेक करेंगे, व्हाट ऑल विल यू चेक? आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन 5 to 6 points in terms of what steps do you need to perform in order to verify the bonus, ठीक है? 5 to 6 points, not more. And can you send this to me by 11 a.m.? अभी बैठ के भेज सकते हो? सोचो, थिंक क्रिएटिवली। बोनस क्या है? इट्स लाइक एन एडिशनल अमाउंट यू आर पेइंग टू हिम, राइट? डायरेक्टर को आप एक एडिशनल अमाउंट पे कर रहे हो, तो वो आप कैसे वेरीफाई करोगे? बस उसका आपको मुझे बताना है, ठीक है? टेक मे बी 20 minutes, आई डोंट माइंड, बट 11 बजे तक मुझे ये बना के भेजो, ठीक है? नाउ वील बी ओके फोकसिंग ओनली ऑन सेक्शन बी। अपना सेक्शन ए का काफी प्रैक्टिस हो गया है, ठीक है? व्हाट आई एम थिंकिंग इज, एंड यू लेट मी नो, वन ऑफ दीज डेज आई विल सिट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन और फटफट फटफट सारे प्रोसीजर खत्म कर देंगे, ठीक है? चलो, सेंड दिस टू मी बाय 11 a.m., ठीक है? प्रोसीजर्स विद सर रिस्पेक्ट टू बोनस। सर Sure. एक्चुअली सर इन द मॉर्निंग सर आई ओवरस्लेप्ट सो आई couldn't join the class. Sir, can you just give me a crux of what happened in I will upload. No, Akshat, no, no, no. I started the class on time. I can't help it if you were late. I will upload the recording. You watch the recording. yes, okay sir, I will. Sir, in that only you have explained what are procedures, na? Yes, yes. Okay, okay. ठीक है? Okay, I will watch the Yeah, procedures. If watch the. I will any doubt, then can Let I ask you in this next session? let me know. Let me know. ठीक है? Okay, sir. Okay. चलो. Thank you. Bye. थैंक यू सर।